this. Okay, can we see all of it? Okay, perfect. I can see your screen. All right, guys. First of all, again, starting. Assalamu alaikum, namaste, and sat sri akal to everyone. जो सारे यहाँ पे हैं. आज हम बात करेंगे about filmmaking. So I wanted to do this presentation so ताकि जब whoever's I heard like last time कि यहाँ पे सारे जो हैं कोई filmmaking के अंदर है, कोई songs sing करता है, कोई you know they do भजन भी गाते हैं. काफी different talent मैंने सुना है यहाँ पे है. तो कर यहाँ पे जितने सारे हैं, can before I begin, क्या मुझे बता सकते हैं कि आप in filmmaking what knowledge or what background do you guys have? Zero. चलिए आज पूरा कर देंगे. I recently started. I do recipe videos, and I do it on Windows Movie Maker. Okay, very cool. Thank you. Anyone else? Faria, मैं iMovie पे बनाती हूँ. I use iMovie too. I love that software. You probably use it on iPhone, right, Uzma? Yes. Pretty cool. Anyone else? मैं live videos बहुत बनाती हूँ. Live videos. उसके लिए बहुत confidence चाहिए होता है. I must say. Is there anything on the Samsung Android as well, like iMovie? Is there something like on the Yes, Samsung? there is. So you guys have a similar software जो मैं आपको बताऊंगी at the end. I use Facebook Live. Facebook Live, that's one as well. कोई यहाँ पे Instagram Live use करता है? I want to use it. I've used it सीखना about पड़ेगा. I've used Instagram Live. मुझे खुद को तो मूवी बनानी नहीं आती, मगर कुछ बरसों पहले जब मैं गाया करती थी तो मूवियां बनवाती थी. वो बनी पड़ी हैं. अच्छा, बनी पड़ी है वो. पोस्ट नहीं की? हाँ जी. कहीं आपने पोस्ट नहीं की, पब्लिश नहीं की? नहीं जी, उस समय ये इतना नहीं था जोर शोर इंटरनेट का और ये सब. अच्छा. ये आज मैं बोल रही हूँ, आज से 20 साल 25 साल की बात है. सही है. जबकि वो जब भी कहीं प्रोग्राम किया तो बुलाती थी कैमरे वालों को, तो वो मूवियां बनाते थे. बड़े वो होते थे जो आप डाल देते हो रिकॉर्डिंग में, तो आप मूवी देख सकते हो. वो उस समय की बनी हुई है, 20-30 साल पहले की. तो आज पूरी अगर प्रेजेंटेशन के बाद आपने पब्लिश नहीं ना की तो मुझे लगेगा मैंने अपनी सही प्रेजेंटेशन नहीं किया है. ठीक है ना? आज आपने सब कुछ सीखने के बाद अपनी वीडियोस पब्लिश करनी है. ठीक है? मगर मुझे तो मालूम नहीं कैसे पब्लिश करनी है. अब सीखूंगी आपसे. जी बिल्कुल. चले देन लेट्स बिगिन. और मेरे गाने, एक और चीज, मेरे गाने जो हैं वो इंटरनेट पे हैं. साउंड क्लाउड मोहिनी खोसला, वो 3 घंटे आप सुन सकते हो. That's all I know about myself. I will definitely check it. मैं आपको भी चेक आउट जरूर करूंगी definitely. जो at the end मुझे सारे बताएं प्लीज. अपनी कोई भी हैंडल, कोई भी अपना है, आप मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मैं भी आपको सब्सक्राइब कर सकूं. ठीक है? तो चलें. एंड ओके, सो आज हम बात करेंगे फिल्म मेकिंग की. एंड मेरा बैकग्राउंड फिल्म मेकिंग से तब से शुरू हुआ है व्हेन आई वाज बेसिकली डूइंग सम यूट्यूब वीडियोस विद शामिद रीस एंड देम. उनके साथ मैंने उनका जो ड्रामा शूट किया था, उसके बाद मुझे ना काफ़ी इंटरेस्ट आ गया कि कोई ना साइड पे मैं फिल्म मेकिंग करूं, क्योंकि मुझे तो काफ़ी शौक है अपनी लाइक यू नो रिव्यूज़ देने का. बहुत शौक है मुझे. जिस तरह के कभी भी मैं कोई चीज़ नई ट्राई करती हूँ, कोई लाइटिंग किट होगी, कोई मेकअप हो गया, या फिर कोई रेसिपी मैंने नहीं ट्राई की, मुझे बहुत शौक है उसके बारे में रिव्यू देने का लोगों को कि मुझे कैसा लगा. काफ़ी जिस तरह टूल्स यूज़ करते हैं हम, फॉर एग्जांपल घर के ही टूल्स हो गए, कोई चॉपर खरीदा है, अगर मुझे अच्छा लगा है तो मुझे उसके बारे में रिव्यू देना बहुत पसंद है. क्योंकि दूसरे लोग भी जब खरीदने से पहले सोचते होंगे कि हम जाके, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं? गूगल पे टाइप करके चेक करते हैं कि उसका रिव्यू चेक करें कि ये खरीदने के लायक है भी कि नहीं. अब ये रिव्यूज आपको कौन दे रहा है? एक कंपनी तो शायद दे रही होगी, ठीक है, उनकी वेबसाइट, लेकिन असल में आप जब देखते हैं ऑन यूट्यूब है, ऑन गूगल है, ये सारे लोगों ने अपने टाइम निकाल के रिव्यूज डाले हैं, तो आपको जाके पता चलता है कि जी हाँ ये चीज खरीदनी चाहिए, शायद ये इस खरीदने के लायक है. ओके, तो दिस इज व्हाई वी नो दैट जो भी आजकल इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट देखते हैं वो कहाँ से आ रही है कि हमें पता नहीं है, और हम उस इंफॉर्मेशन को देख के किधर से एक्सेस करें हैं कि उसका लाइक इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव कि हम कहाँ बैठ के वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं. तो अगर आप सोचें, अगर आपकी कोई ऐसी चीज, अगर आप किसी के बारे में कोई पैशनेट है और आपको पता है कि आपकी बात बहुत नॉलेज है उसके बारे में, तो सोचें कोई और ऐसा वहां बैठा होगा कहीं भी दुनिया के कोने में जो ढूंढ रहा होगा कि चेक करें कि ये इस बारे में किसने लिखा है.
इस तरह वो आपकी चीज को एक्सेस कर पाए। इसलिए इस तरह आप अपनी सोच जो है, सोच या अपना टैलेंट काफी लाखों को पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के जरिए। एंड फिल्म मेकिंग उसका एक बिग पार्ट है। तो फिल्म मेकिंग से कंटिन्यू करते हैं। जो सबसे पहले आपको वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए है स्क्रिप्ट। इससे पहले कि आपने कैमरा पकड़ना है, कुछ पकड़ना है, आपने सबसे पहले बनानी है स्क्रिप्ट। आप बनाना क्या चाह रहे हैं? आपने पूरी अपनी वीडियो जो बनानी है वो कितनी लंबी होएगी? अगर आप पूरे 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे तो शायद मुश्किल ही है कि काफी लोग देखेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो घंटे की क्यों है? अगर आप ड्रामा बना रहे हैं तो समझ आता है कि ठीक है, ड्रामा बंदा 1 घंटे का देख रहा है। लेकिन आप फर्ज करें, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रिव्यू देना है किसी प्रोडक्ट का, जिस तरह हो गए चलो लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, अगर उसका रिव्यू 1 घंटा होएगा तो कौन बैठ के मेरा रिव्यू देखेगा 1 घंटे का? ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडियंस काफी सोचनी पड़ती है आपको कि आप किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप कौन से एज ग्रुप। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, जो फिलहाल मैं अपना एज ग्रुप सोच के बनाती हूँ। मैं वो वाली वीडियोस बनाती हूँ कि जो रिव्यूज देखने आते हैं लोग, फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज। तो मेरी जो जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत फोकस्ड है। जो भी लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि वो मेकअप के बारे में कोई चीज खरीदते हैं तो जाके वो सर्च करते हैं, तो उनको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी ऐसे। तो इससे जो टाइटल्स मैं यूज करती हूँ वो मुझे सोचने पड़ते हैं कि कौन सा टाइटल मैं ऐसा यूज करूंगी कि कोई बंदा मेरी वीडियो को क्लिक करेगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको अपने माइंड में रखने से पहले जब वीडियो शूट कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप जब वीडियो बनाना शुरू करेंगे ना बगैर स्क्रिप्ट के, आई थिंक स्क्रिप्ट एक नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि व्हेन यू सिट डाउन एंड ट्राई टू फिल्म अ वीडियो, आप जब बात कर रहे होंगे ना अपनी, आपको भूल जाएगा आप क्या कह रहे हैं बीच में। इससे आपकी वीडियो इंटरप्ट होती रहेगी। अगर आप स्क्रिप्ट बनाएंगे ना पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने इस आधे जो फर्स्ट के 5 मिनट से मैंने ये बात करनी है, दूसरे मिनट में मैंने ये बात करनी है, तीसरे मिनट में मैंने वो बात करनी है, दिस वे यू कैन ऑर्गेनाइज योरसेल्फ व्हेन यू आर मेकिंग योर वीडियोस। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स आपकी वीडियो या कोई भी कंटेंट किसी डिवाइस के बगैर तो बनेगा नहीं। तो आपको या कैमरा चाहिए या फिर स्पीकर या ऑडियो चाहिए अगर आपने गाने हैं जस्ट वर्बली, वीडियो के बगैर। ओके, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कैमरा इस व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपका कैमरा सबके पास तो आजकल स्मार्टफोन है ही, आई असूम सबके पास है ना, सैमसंग या आईफोन हो गया जिसके अंदर बिल्ट इन कैमरा है। करेक्ट जी। तो इसका मतलब है कैमरा तो सबके पास है। तो ऑफ कोर्स शुरू में तो कोई भी कहता नहीं है कि आपको नया कैमरा लेने की जरूरत है। जब मैंने शुरू किया था, सबसे पहले मैंने अपने आईफोन से शुरू किया था। मैंने आईफोन खरीदा, मैंने उसके लिए ट्राइपॉड बाय किया। उसके बाद मैंने थोड़ा बाय किया इक्विपमेंट, जो थोड़े मेरी लाइटिंग नहीं होती कमरे की, उसको बैलेंस आउट करते हैं। जब मेरा अभी फॉर एग्जाम्पल मैं फेस टाइम में बैठी हूँ, जो लाइटिंग मेरे मुंह पे है ना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ, मेरे पास कोई भी लाइटिंग सामने नहीं है, मैं सिर्फ विंडो के सामने बैठी हुई हूँ। सो मेरा फेस अनइवन नहीं है, कहीं से मेरी फेस के ऊपर डार्क आ रहे हैं शैडोज, कहीं लाइट आ रहे हैं, तो मेरा फेस वेल लिट नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो भी आपको इक्विपमेंट आपको यूज जरूरत पड़ेगी आपकी वीडियो के लिए, आप उसके बारे में पहले सोचें। अगर आप फॉर एग्जांपल कुकिंग चैनल है आपका, तो ऑफ कोर्स आपको एक किचन की जरूरत पड़ेगी और स्टोव की जरूरत पड़ेगी, और पॉट्स एंड पैन्स जो भी आपने बनाना है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोचा है, अब आपको ये सोचना है चलो आपने यहाँ पे वीडियो शूट करनी है, फिर आपको सोचना पड़ेगा अब इस वीडियो बनाने के लिए लाइट कहाँ से आएगी किचन के अंदर। अगर आपके किचन में विंडो नहीं है तो लाइट कहाँ से लेके आएंगे आप? तो ये काफी चीजें सोचनी पड़ती है बंदे को। तो इसलिए इससे पहले आप जब स्क्रिप्ट बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से आप अपना जो भी आपको कैमरा है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई बहुत लेट्स से हाई डेफिनेशन चीज शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं शूट करती हूँ अपने आई लेंसेज के कॉन्टैक्ट्स, तो जब मैं अपने फोन से शूट करती थी मुझे लगता था जो मेरी ऑडियंस है ना, वो कहीं जब मेरी वीडियोस देखती है तो उनको फिर भी पता नहीं चल रहा है कि जो रिव्यू जितना जिस क्वालिटी का मैं रिव्यू देना चाह रही हूँ ना, वो मेरे कैमरे से कैप्चर ही नहीं हो रहा। तो वो सोच के मैंने जाके ना फिर अपने लिए एक कैमरा खरीद लिया जिसके पास थोड़ा ना वो जूम इन लेंस है कि वो इतनी क्वालिटी डीप दिखाता है कि मेरी पूरी अंदर की आई नजर आती है आपको। तो तब जाके ना मेरी अब यूट्यूब क्या नाम क्या है उसके उस कैमरे के खरीदने के बाद मेरे जो ऑडियंस के अंदर जो व्यूज बढ़े हैं ना वो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जिस चीज की मैं वीडियो बना रही थी रिव्यूज, अगर लोगों को दिख ही नहीं रहा सही तरह तो फिर वो कैसे मेरा रिव्यू अच्छा रहेगा। ओके Faria, I have a question. या गो ऑन। जो हमारे पास तो आम से फोन है, ठीक है, आईफोन हो गया, ये वो हो गया, तो उससे भी हम अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं कि हमें जी। इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है?
इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, लाइक आई सेड इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। मैंने भी स्लोली किया है, मैंने तो फर्स्ट 5 मंथ्स आईफोन से ही फिल्म किया है और मेरी क्वालिटी प्रीटी गुड थी। आपको पता है क्या, बस सीखना पड़ेगा अपने आईफोन से। जब आपका डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आईफोन है या एंड्रॉइड है, आपके कैमरे के ऊपर ना काफी फीचर्स हैं जिनको हमें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था। तो आप सेटिंग्स पे जाकर चेक करते हैं ना, एक तरीका है कि आप अपने कैमरे की लाइटिंग को ना एक बार फिक्स कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके खुद के कैमरे के अंदर ना 3 टाइप की क्वालिटी होती है, लो, हाई और मीडियम। अब क्वालिटी का मतलब ये होता है फाइल उसका ना फाइल बढ़ जाती है। जिस तरह जब कंप्यूटर में अपलोड करते हैं ना फाइल, जितनी हाई क्वालिटी होगी उतनी आपकी क्या नाम क्या फाइल का साइज बड़ा होएगा। तो बस यही बात है, लेकिन अदर देन दैट आपके फोन के अंदर ये फीचर जरूर हैं उसमें, डेफिनेटली। ठीक है HD वगैरह, HD जी, HD वगैरह। जब आप HD वीडियो बनाते हैं ना, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी सबसे वो हाई होती है, लेकिन बस उसको जब आप अपलोड करते हैं कंप्यूटर में, उसको बस थोड़ी देर लगती है ज्यादा से। यूजुअली आई थिंक इट टेक्स काफी 3-4 घंटे लग जाते हैं उसको अपलोड होते होते। लेकिन अगर फोन से डायरेक्ट उसको YouTube पे करना हो तो फिर तो जल्दी हो जाएगा ना? या डायरेक्टली फ्रॉम फोन वो बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। बस जब आप करते हैं ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से सॉफ्टवेयर यूज या फिर हाई क्वालिटी डेफिनेशन, तो वो फाइल काफी बड़ी होती है। जब वो यूट्यूब पे अपलोड हो रही थी ना, उसको करते करते कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है, डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग योर वीडियो इज। मैंने एक बार शूट की थी पूरी, जब मैं शुरू किया था तो मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती थी, तो मुझे लगता था उसके मेरे व्यूज नहीं आते क्योंकि बहुत ही लंबी थी ऐसे ही। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक 40 मिनट की वीडियो शूट की, उसको पूरा लग गए थे 7 आवर्स अपलोड होते होते यूट्यूब पे। तो दैट वाज अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसे मुझे लगा, मैंने कहा अगर छोटी मैं वीडियोस बनाऊंगी तो कितना टाइम लगेगा। अब मेरी वीडियोस जब अपलोड होती हैं तो ज्यादा देर नहीं लगती। आई वुड से कि उनको 30 या 40 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि अब छोटी बनाना शुरू कर दिया मैंने। ये कुकिंग के लिए अगर कोई बनानी हो वीडियो तो उसका वो ये होता है जो कि जब वो स्टोव चल रहा होता है तो वो फोगी हो जाता है कैमरा। ओके, अब अगर आप उसका शूट जो उसका कोई कैमरे जब आप कैमरा की पोजीशन पर देखेंगे, आप कैमरा ऊपर से आपने ट्राई किया या फिर साइड पे आपने रखे, कैसे किया आपने कैमरा रख के? साइड पे बस पकड़ के किया है अभी तो, क्योंकि आई एम कंफ्यूज अबाउट द कि which स्टैंड इज बेटर टू बाय। तो ट्राइपॉड, आई थिंक ट्राइपॉड आपको, मैंने एक बार शुरू में जब खरीदा था ट्राइपॉड, मेरा ट्राइपॉड इतना अच्छा नहीं था, मुझे लगा I got बाद में tripod from जाके Amazon. I bought it from Amazon too, लेकिन मैंने डिफरेंट वाला Yeah. खरीदा। मैंने उस टाइम सोचा आप नहीं अगर कि कोई लिंक वगैरह कोई अच्छे ट्राइपॉड का और लाइट्स वगैरह का बता दें तो, जी क्योंकि अब I was looking for to buy a stand and a light for my Android. डेफिनेटली मैं आपको जरूर उसकी लिंक करूंगी। मैंने बाय किए हैं 2 सो फार एंड दे आर डिसेंट, काफी डिसेंट है, उनका प्राइस भी काफी डिसेंट थी। सो दे वर्क। उनका ट्राइपॉड फुल तरह मूव हो जाता है, नीचे को भी हो जाता है, ऊपर को भी हो जाता है, उसके ऊपर कैमरा भी लग जाता है, उसके बाद फोन भी लग जाता है, दोनों लग जाते हैं। So I'll definitely link it to you. It was pretty cheap. I think it was like $20 and not bad, at all. हाँ, बहुत काफी cheap था। तो उसके साथ मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई हैं कुकिंग की। I'll share my channel with you, आप वहाँ देख लेना मैंने कैसे बनाई है। लेकिन मेरी एक्चुअली बस the good part was जब मेरी कुकिंग पे बना रहे थे ना, तो मेरी किसी और ने शूट की थी मेरे साथ। तो किसी और ने कैमरा पकड़ के मेरे साथ मूव अराउंड किया था, तो वो थोड़ी हेल्प हो जाती है ऑल्सो। ट्राइपॉड, अगर आप ट्राइपॉड तो सबसे पहले लेना चाहिए, क्योंकि आप हर टाइम किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते कि घर में कोई आपके लिए कैमरा पकड़ दे, क्योंकि वो भी शेकी वीडियो हो जाती है ना। फिर जब आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वीडियो स्टिल है। अगर आप कोई रेसिपी काट रही हैं तो बिल्कुल स्टिल कैमरा होना चाहिए। तो इसलिए आपको ट्राइपॉड ऐसा चाहिए जो ऐसे मूव हो जाए, उल्टा भी हो जाए, नीचा भी हो जाए, ताकि जब आप ऐसे से काट रही हैं, जी 360 एग्जैक्टली भी हो जाए। So you have to make sure that you get a tripod that kind of completely moves around with different features, which I will link for you as well. Very good question. Okay. Now again, like I said, mic बहुत जरूरी है। Mostly तो phones के अंदर mic है, okay? पर आप कभी notice करेंगे जब हम phone पे भी किसी से बात करते हैं तो हमारी कभी-कभी आवाज completely clear नहीं होती है। So you want to make sure जब आप अपनी इतनी full video बना चुके हैं, you want to make sure कि आपकी आवाज तो सही जा रही है अंदर के। और काफी क्योंकि हमारा फोन इससे ज्यादा, तो मैं हमेशा एक्सटर्नल माइक यूज करती हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने हेडसेट लगाया हुआ है ना, तो जब मैं बात करूंगी ना, मैं पहले इसको प्लग करके अपने फोन के अंदर इसमें स्पीक करती हूँ। लेकिन ये बिग है ना, मेरे पास छोटा वाला भी है जो थोड़ा छुप जाता है यहाँ पे। तो अभी तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है? हेलो, डॉक्टर सरफराज, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। की आवाज मुझे भी नहीं आ रही। I will be muting everyone for this session.
Faria, you can continue. Thank you. Okay, all right. So anyways, मैं बात करी थी आपको एक्सटर्नल माइक आप बेशक लें, वो भी काफ़ी बहुत चीप आता है, वो भी आ जाता है आई थिंक anywhere between you can get it from $10 to $20 as well. फुल माइक आता है, उसकी कभी कभी इतनी लॉन्ग वायर होती है कि आप पूरा छुपा के उसको पूरे रूम के अंदर घूम सकते हैं बात करते करते. एक्सटर्नल माइक अपने यूज करना है तो आपकी मर्जी है, प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है as we go. Okay. Hold on. Okay. Next, let's talk about the background. जब आपने अपनी फिल्मिंग जहाँ पे करनी है, किचन में करनी है, रूम में करनी है, आपने मेक श्योर करना है आपके बैकग्राउंड में क्या नजर आ रहा है. एक फ्रेम है ना, अब जब देखें मैं बैठी हूँ यहाँ पे आपके सामने, मेरे बैकग्राउंड में ये नजर आ रहा है. अब आपने देखना है, चलो फिलहाल तो मेरे कमरे में पूरी वाइट दीवार है, तो it's not that distracting. अगर आप, for example, I'm going to use you as an example, Gulnas Rehan, okay? So I'm looking at you right now. When I see your background, आपके बैकग्राउंड में कितनी चीजें पड़ी हुई हैं. So you want to make sure that it's not distracting. जब कोई आपको देख रहा है ना, तो वो आपको देख रहा है, आपके बैकग्राउंड पे फोकस नहीं कर रहा है ज़्यादा. Like, don't worry. She moved it. She's so cute. So yeah, look. For example, अब आपने एक देख लें. उसने बस अपना कैमरा चेंज किया है. अब फोकस थोड़ा उन पे आ गया, उनके रूम पे कम आ गया है. इतने छोटे से ट्वीक्स के साथ ना आप अपनी बैकग्राउंड को फिक्स कर सकते हैं. Look at Samina now. She's sitting down at the back. She has one curtain. It's white. So I recommend, अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको solid background use करें. कोई भी एक full color होगी, एक दीवार जो plain है पीछे बेशक blue whatever color it is, या फिर white background भी use कर लें. Because अगर आप white चले, मेरा room के अंदर चलो white है, एक softer आता है जहाँ पे जो आपकी already white background है ना, दीवार white, उसको और white कर देता है. It makes it look like a professional video shoot की गई है. जब आप स्टूडियो में देखते हैं, जब बंदा फोटोज खींचता है, passport photos, उन्होंने पीछे कर्टन नहीं लगाया होता है, but they just tweak it with a software जहाँ पे उनकी background full white कर देते हैं. So this really helps to take your video to a next professional level, having a white background at the back. If not white, have a clear background. I like to use in my videos, क्योंकि मैं कभी-कभी room में shoot करती हूँ, so I like मैं थोड़ा tweak करती हूँ, so I use objects like plants, greenery as the background, so ताकि थोड़ा bright लगे, cute लगे. I use books. I even use candles just to kind of warm up my background to make it look more soothing. जब कोई मुझे देख रहा है, तो वो थोड़ा distracted नहीं है, वो मेरी बात सुन रहा है. You want to make sure that's very, very important, okay? At the end, just keep it simple, still visually appealing होना चाहिए. Priya, you mentioned about the background. Sometimes you have a virtual background, and when you move around, your face becomes a little bit distorted. That's correct. So you want to make sure. Is there software there which can eliminate that? So you don't want to film your video with a virtual background though. You don't want to do that. You want to film a normal video, but you can use softwares to insert a visual background. आप बात कर रहे हैं green screen की. वो green screen use करना पड़ता है. आपको एक screen use करने पड़ेगी पीछे. वो जब आप use करेंगे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, आप उसके ऊपर पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं. प्लेन में अपने आप को दिखा सकते हैं. आप दिखा सकते हैं आप किसी टाउन में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूज करनी पड़ती है ग्रीन स्क्रीन. Green screen. So the green screen has any like a sheet of cloth, green or plastic or anything? Yeah, it's like that. It's literally a green screen. So it's like a colored green screen that you use behind you. Is it a solid green or light green or what? It's like a solid green. मैं actually आपको उसकी photo दिखा दूँगी at the end of this whole presentation. I'll make a note of that. आप मुझे याद करा दीजिएगा at the end. मैं आपको उसकी ज़रूर photo दिखाऊँगी. So that can be used to make sure that अगर आपको पता है कि आपकी background अच्छी नहीं है, आप दूसरी choose करना चाहती हैं. अगर काफ़ी लोग comedy जो videos करते हैं ना, for example stage show पे, अगर वो घर में बैठ के shoot करते हैं, लेकिन वो उस green screen use करके उसके बाद अपने आप को दिखा देते हैं कि वो कहीं और फलानी जगह पे हैं. So that's a technique that they use to do their comedy videos, you can say. Okay, for example. Very good question, definitely. Okay, so continuing on, one second, location. So again, kind of following to the same theme, location and time of day is very important. So usually मैं अपनी videos जब film करती थी शुरू में, क्योंकि मेरे पास इतनी equipment नहीं थी, I used to do it in the daytime, in the afternoon time, when there would be plenty of sun for me to use. So I always used daytime window light. मैं अपनी नीचे जब बैठी थी, तो जो है नहीं क्या नाम क्या विंडो के सामने बैठ जाना है मैंने, और थोड़ा सा अपने आपको इस तरह पोजीशन कर लेना है कि जो लाइटिंग आ रही है तो सन मेरे मुंह पे डायरेक्टली नहीं आ रहा, बिकॉज ये नहीं चाहते कि जब आप फिल्म कर रहे हैं तो बार बार आपके मुंह के ऊपर सन कभी चला जाए, कभी सन आ जाए. दैट्स डिस्ट्रैक्टिंग. ये आपकी जो वीडियो है ना उसको ऑटो फोकस से भी बाहर ले आएगा. Which is why you want to make sure कि अगर आप natural daylight use कर रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को इस तरह पोजीशन कर लें कि अगर सन बदल भी गया ना, it will be still daytime,
लेकिन कोई भी उसकी जो रेज है वो आपके मुंह पे चेंज नहीं होंगी. So you see that a lot even right now when we talk on this Zoom call here. Some people, like the sun is coming. Like if you see Uzma's, I see her. The sun keeps coming on her face. It keeps going away. But in a professional video, you want to make sure that this type of stuff does not happen. Okay? And also, depending on your type of filmmaking, for example, अगर आपने कोई trailer देना है, let's say trailer आपने देना है, कोई गाने का trailer देना है, तो आपने कोई सीनिक टाइप जगह पे शूट करना है, फार्म पे शूट करना है. अब बाहर जब आप बाहर जाएंगे आपको मेक श्योर करना है कि वहां पे किस तरह की लाइट होगी, क्योंकि दिन में बेशक बाहर तो लाइट है, लेकिन जब आप कैमरा उठाते हैं ना तो इंसान के मुंह पे जो है समटाइम्स योर फेस इज अनइवन, कहीं डार्क आ रहा होता है, कहीं लाइट आ रहा होता है. तो आप अपने साथ क्या इक्विपमेंट लेके जाएंगे या क्या मेक श्योर करेंगे कि बंदे की जो सीन है वो सही तरह शूट हो जाए. इसमें आते हैं वो जो अम्ब्रेलाज नहीं यूज करते हैं हम, रिफ्लेक्टर्स, कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं आपके फेस के ऊपर, वो हो गए. या फिर पोर्टेबल लाइट भी आती है एक कि आप साथ लेके घूम सकते हैं to make a film in outside daytime as well. Or इसके अंदर different, you guys can use different types of locations such as landscapes, scenic type, mountain type of area, hiking type of an area. अगर आप for example morning walk के लिए जा रहे हैं, अपना vlog करना है कि आज मैं सुबह walk के लिए उठा हूँ और मैं यहाँ जा रहा हूँ इस जगह पे, so you're gonna make sure कि आप क्या चीज अपने साथ लेके जाएंगे कि आपकी scenery अच्छी लगेगी ज्यादा in the shot. And उसके लिए again जो माइक के मैंने बात की थी, अब माइक पे बहुत जोर देना है. अगर आप चल रहे हैं बाहर तो जो हवा चल रही है, हवा जो माइक पे आवाज आएगी उससे आपकी ऑडियो खराब हो जाएगी. सो यू वांट टू मेक श्योर कि वो जो माइक के ऊपर जो मफलर नहीं होता जो विंड को ब्लॉक करता है, वो जरूर आपको अगर आपको जरूरत पड़े आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप अच्छी वीडियो बना रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है तो आपकी वीडियो फिर कौन देखेगा ऐसे. इवन इफ यू थिंक अबाउट इट, जब हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं, अगर किसी की आवाज बार बार अटक रही हो, so we don't want to watch the video, we click away from it. So you want to make sure that you take care of the audio. Okay? It's called a mic reflector. That's called a mic muffler. Mic muffler. It's like आपने वो fuzzy कभी thing देखी है, ऊपर लगी होती है माइक के ऊपर, जिनके पास कैमरे होते हैं. It's like a fuzzy, yeah, that's called a mic muffler. वो wind को block करने के लिए outside. अच्छा अच्छा अच्छा. काफी लोग वो यूज करते हैं जिनके कैमरे के अंदर बिल्ट इन माइक होता है. ठीक है. और मेरे फॉर एग्जांपल मेरे कैमरे के अंदर एक्चुअली बिल्ट इन माइक नहीं है, ये उसके अंदर फीचर था. आई विश आई गॉट द built in mic on, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे. सो मैं पता क्या, सो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ नॉइज इशू आई यूज अ एक्सटर्नल माइक. आई प्लग द, मेरे पास एक मैंने माइक खरीदा हुआ है, वो अपने फोन से प्लग इन करके मैं अपने जेब में रखती हूँ हमेशा. सो वो यहाँ पे अटैच होता है मेरे, बिल्कुल मेरे मुंह के पास होता है. When I'm outside, I don't move that much. It's not the best option, I would say, but it still does the job. तो जो मेरी आवाज है वो मेरे फोन में रिकॉर्ड होती है, लेकिन मेरी वीडियो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होती है. फिर एट द एंड मैं एक वीडियो सॉफ्टवेयर यूज करके अपनी वीडियो और अपनी वॉइस को मैच करती हूँ इकट्ठे फाइल्स को. Like it's How much this mic cost? A mic depends on the mic that you're getting. If you want like so let's say if you want an average external mic, पहली बात तो approximately अगर आप बात करें जो आपके जो हेडफोन्स नहीं है, जिस तरह मैं बात करूँ हेडफोन से, और जो छोटे जो हम माइक यूज करते हैं हेडफोन जब हम बाहर जा रहे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसकी भी माइक क्वालिटी नॉट बैड एट ऑल. लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल वीडियोस करनी है, लेट्स से टॉक शो टाइप वीडियोस, उसके अंदर आपको हाई क्वालिटी का माइक चाहिए होगा. दैट कैन कॉस्ट यू एनीवेयर फ्रॉम $20 to $60, the proper mic, the big one. Or a small one, just external mic, that's cheaper. That's more towards the $10 to $20 range. But you don't need to buy that if you already have the headphones. अगर आपके पास headphones नहीं है जो हम hands free use करते हैं जब हम बाहर जाते हैं, like listening to your iPod or whatever, उसका mic भी आप use कर सकते हैं. The mic is available for you. आपको बस अपने मुंह के पास रखना पड़ेगा और उसको हिलाना नहीं पड़ेगा. Just have it steady. That's it. आर्या, Bluetooth कितना effective है? Bluetooth के अंदर बात वही आ जाती है. Again, it's in the air. Like it's in your ear. This is like AirPods. There's a lot of wind going through in the AirPods when you're talking to somebody on the phone. So I wouldn't say that's that effective unless you can like find a way to have them muffled, but I don't think there is one so far as I know. That could be wrong, I'm not sure. But that's how you want to make sure that there are wind mufflers, there are mic mufflers, and you have to make sure if you're using a professional camera, I recommend from my experience कि आप लोग mic वाला लेना, mic वाले के बगैर मत लेना, because I think it's more of a hassle, extra step है. अगर मैंने अब मुझे जो separate अपनी mic की audio record करनी पड़ती है, I have to match it up. तो फिर जब बंदा बात कर रहा होता है, जब आप dubbing देखते हैं ना टीवी के अंदर, जब तभी वो लोगों ने यही किया होता है, क्योंकि वो माइक एक्सटर्नल यूज करते हैं ना जब वो शूट कर रहे होते हैं फार अवे में, तो वो जब उसको अटैच करते हैं ना, कभी कभी जब वो बंदा बोलता है उसके मुंह से और उसकी ऑडियो मैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो एडिटिंग सही नहीं हुई होती, एंड दे हैव डन इट सेपरेटली.
next time when you do it, watch that. Please make a note of that. आप कभी notice करेंगे अब ज़्यादा more critically जब आप movie देखा करेंगे कि इसने ऐसे record किया. Okay. And हमारे पास जो यहाँ ऑडियंस है उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल वीडियोस बनानी है और कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ घर में ट्राई करना है. जिसे घर में ट्राई करना है. That makes sense. तो जो घर में जिन्होंने ट्राई करना है अगेन फिर रेकमेंडेड आपके लिए वही है. आपको नहीं जरूरत है कि आप बाहर से न्यू माइक खरीदें. आप फिलहाल वो यूज कर सकते हैं. अपना आईफोन का माइक भी यूज कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द कोई साउंड नहीं है, कोई अलार्म की साउंड नहीं है, कोई स्मोक डिटेक्टर की साउंड नहीं है, रूम के अंदर कोई साउंड नहीं. क्योंकि एक बार द मोस्ट सैड पार्ट इज कि आप पूरी अपनी वीडियो फिल्म कर लें, एट द एंड आप जब प्ले करें तो आपको देखें कि ओहो पीछे कोई एक साउंड बज रहा था, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है. सो यू वांट टू मेक श्योर दैट you know what when you're filming your video कि आपकी sound सही आ रही है. So never continue a video unless you know the sound's good. Sure, go on, Mother. I believe there is a software where you can remove the distracted sounds. There is. So it's pretty much in all हर सॉफ्टवेयर के अंदर है. फॉर एग्जांपल मैं तो iMovie यूज करती हूँ बिकॉज मेरे पास आईफोन है. मैं पहले अपने आईफोन से ही उसको एडिट करती हूँ. आईफोन से ही एडिट करती थी, उसके बाद मैं अपने मैक पे करती हूँ. लेकिन सॉफ्टवेयर सेम है iMovie. जिनके पास भी आईफोन है आपके लिए काफी इजी है iMovie यूज करना. एंड फॉर एन एंड्रॉइड मैंने ऑल्सो एक ढूंढा है सॉफ्टवेयर, मैं आपको एंड पे उसका जरूर बताऊंगी, जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं कि उनके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है जो iMovie की तरह ही है. उसके ऊपर आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं अपने एट द होम. वेरी बेसिक, बहुत ईजी, सिंपल. ओके. So फारिया यहाँ 28 पार्टिसिपेंट्स हैं और एंड में उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि वो एक एक 2-2 मिनट की कोई वीडियो बनाएं, कोई मूवी बनाएं और वो भेजें. तो आप ज़हन में रखना कि उन लोगों को ये सब टेक्निक्स जो हैं पता चलती जाएं. ठीक है? For sure. Thank you so much, Osman, for that. I just can't tell. Oh, there you go. Okay. Again, lastly, let's talk about lighting. This is a very, so like I mentioned, so अभी so far मैंने mention कर दिया है कि आपको कैमरे की तो जरूरत है ही क्योंकि आपने फिल्म में करनी है तो, और आपको क्या नाम क्या है, माइक की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, कोई भी इक्विपमेंट. Lastly, lighting is so important. Again, like I've been mentioning so far, अगर अगर आप नजर ही नहीं आ रहे हो वीडियो के अंदर और आप बात कर रहे हो किसी बारे में तो बंदा कहता है मैं क्या देखूं, देख क्या रही हूँ, क्योंकि विजुअली अपीलिंग खत्म हो जाता है ना अगर लाइटिंग से. अगर आपकी जो वीडियो वेल लिट नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल शैडोज है मेरे मुंह के ऊपर, अगर मेरा आधा मुंह सिर्फ नजर आ रहा है, आधा मुंह नजर नहीं आ रहा, काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है. आप नोटिस करते होंगे जब हम ड्रामास देखते हैं, कोई भी मूवीज देखती हैं, उसके ऊपर आई नो प्रोफेशनली शूट किया गया है लेकिन कितना ऐसा लगता है कि हम वहां पे हैं क्योंकि वो बहुत क्लियर एंड वेल लिट होता है उनका जो फेस है और उनकी बैकग्राउंड एवरीथिंग. सो यू वांट टू मेक श्योर अगर आप कहीं बैठे हैं एक रूम के अंदर, बेशक आप रूम को थोड़ा डार्क कर दें, अपने आप को थोड़ा लाइट अप कर दें, वो आप यूज करते हैं विद स्टूडियो लाइटिंग. अगर आप डे टाइम में नहीं फिल्म करें यू कैन यूज स्टूडियो लाइटिंग. अब किसी ने पूछा था मुझसे कि लाइटिंग कितने की आप आती है Amazon पे कहीं भी देखे, तो मैंने इस तरह का जो आप देख रहे हैं लाइटिंग सेट आपके सामने है, सेम इस टाइप का ही लिया है with 2 stands with no ring lights, just the 2 stands and the tripods. ये full lighting set मैंने लिया था about $100. I invested $100 into the whole lighting set. अब मैंने ये सोच के लिया कि even though मैं रोज तो फिल्म नहीं करती, but they have changed the way I do my videos. अब मुझे वेट नहीं करना पड़ता कि दिन कब है रात कब है, क्योंकि विंटर के अंदर तो सन आता ही नहीं है बाहर, तो लाइट होती ही नहीं है, डार्क डार्क लगता है. अब मुझे ये नहीं फोकस करना पड़ता कि अपने रूम से मैं कोई लैंप उठा के लेके आऊँ मेरे सामने रखूँ या कोई, मैं बस ये यूज कर लेती हूँ. लेकिन आई डू वांट टू मेक श्योर, आई वांट टू लेट यू नो, जो घर में सिर्फ ट्राई करें, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, शुरू में जब मैंने शुरू किया था मेरे पास लाइटिंग इक्विपमेंट नहीं थी, तो मैंने अपने घर में DIY बॉक्स खुद बनाया था. तो मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेके उसके अंदर क्या नाम क्या आगे जो है नहीं उसका एक फुल आगे से काट के उसके ऊपर मैंने लगाया था वैक्स पेपर, जो हम यूज नहीं करते खाने के ऊपर वैक्स पेपर. आई कवर्ड इट विद दैट ताकि उसके आगे वो कवर्ड है, और पीछे जो है उसके कोई भी आप लैंप नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपका पुराना कोई लैंप है, लैंप की जो वायर होती है आइकिया से भी मिल जाती है, मेरे पास आइकिया वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने आइकिया वाला जो है बेसिकली लाइटिंग फिक्सचर उसके अंदर बैक अपने कार्डबोर्ड से स्विच करके वो एक सिर्फ फ्रंट साइड काटी हुई थी, सो फ्रंट साइड कटी हुई थी एंड बैक कोई कटी नहीं हुई थी. बैक पे मैंने एक होल करके लाइटिंग डाल के और फिर वैक्स पेपर लगा के उसको मैं यूज करती थी अपने वीडियोस बनाने के लिए. लाइटिंग बॉक्स ये DIY है, आप इसको YouTube करिएगा सर्च, दिस विल सेव यू लॉट ऑफ मनी. शुरू में आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपको जरूरत है कि नहीं. मुझे एक्चुअली मैंने पूरी जो फिल्मिंग की थी इससे मैंने एटलीस्ट 4-5 मंथ्स यूज किया मैंने, इसके बाद मैंने कहा चलो अब अपग्रेड करते हैं. नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर अपग्रेड, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई दैट. डॉक्टर ring light
Ring light. Yeah, let's talk about the ring light. Now, ring light is also, I think, a very inexpensive way to have lighting. Ring light अब हर तरह की आती है. एक होती है plug-in, कि आप उसको plug in करके वो काफी ज़्यादा high definition की होती है कि आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं. Ring light की वजह से आपको what it does is वो बस आपका face light up करती है. जहाँ पे आप बैठे हैं ना आपको capture करेगी. तो ring light बहुत ideal है वो जिन्होंने अपने मुंह पे कोई चीज़ दिखानी हो. For example, makeup, a skin care routine. कोई भी ऐसी चीज है ना उसके लिए रिंग लाइट बहुत अच्छी रहती है. यहाँ आप सिर्फ आपने बात करनी है. What about cooking के लिए ring light नहीं अच्छी होगी? Cooking के लिए I wouldn't recommend ring light. I would just recommend a studio type of a light. But again, if you can't afford it right now, the best way is to DIY it. You can always DIY it. If not DIY, you can always bring a lamp. किसी को बोलना पड़ेगा आपको कि मेरा लैंप यूज करें क्योंकि जब कैमरा मूव हो रहा है you want to make sure the light comes with it. तो फिर इसलिए आप वो यूज कर सकते हैं as a temporary measure. फिर आप later decide कर सकते हैं if you need a studio. Best option यही है कि आप डे टाइम में फिल करें. फिर आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी. Yes. You're saying DIY है? DIY में do it yourself. Okay. Okay, so आप जब YouTube पे सर्च करेंगे ना DIY light box for film making, आपको ये नजर आ जाएगा. मैंने भी वहाँ पे वीडियो देख के ही अपना बनाया था खुद घर के अंदर. Very useful है आपके लिए. और ये लाइट बॉक्स आपको पता है कभी भी आप यूज कर सकते हैं. सिर्फ फिल्म मेकिंग के लिए नहीं. मैं कभी कभी अपनी जब फोटोज अब लेती हूँ प्रोफेशनल फोटोज में बैठ के घर में मैंने अपनी फोटो लेनी है. कभी भी उसको ऑन करें आपके पास लाइट है घर के अंदर. यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. आपके घर में कभी कोई इवेंट हो जाए, लेट्स से बर्थडे शावर, बेबी शावर, एनीथिंग लाइक दैट, ये आपकी लाइट्स वहाँ काम आ जाती हैं. So if you think about it from that perspective, you can also go ahead and invest in these lights because they have a really multi-purpose end ka. Straight up. If you have a flexible, sorry, if you have a flexible light, like some are with the flexible, you can put in the front of that Bex paper. That's correct. That's correct. Very correct. Exactly. But you probably just have to get a better light from IKEA. मेरे पास नहीं थी flexible क्योंकि मैं तो वैसे use किया था. But then you can look for अगर आपने खुद ही बनाना है IKEA से ऐसी light जो जिसके अंदर lever हो जो back and forth move कर सके वो buy कर लें. वो ideal रहेगा आपके लिए definitely. फारिया आजकल मार्केट में कुछ कैमरों का वो ऐड चल रहा है जो कि कहते हैं कि जो आपकी मूवमेंट को वो फॉलो करते हैं. Right? क्योंकि that's called a stabilizer. आप stabilizer की बात करें. So वो usually लगता है. So stabilizer you will not need it. आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. Stabilizer उनके लिए है जो scenic shots नहीं कर रहे थे जब हम टीवी पे देखते हैं जब बाइक पे you know someone's riding a bike और वो fast जा रहा है उसके साथ कैमरा जा रहा होता है वो stabilizer होता है कैमरे के लिए. Unless अगर आप ऐसे शॉट्स कर रहे होंगे आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टेबलाइजर बस आपकी जो वीडियो है वो शेकी को ना एडजस्ट करता है. और वैसे भी उसके लिए जितनी आपको जरूरत पड़ेगी ना मेकिंग लेट्स से कुकिंग वीडियो वो आपके जो भी आप एडिटर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना उसके अंदर है. एक फॉर एग्जांपल आई मूवी के अंदर एक ऑप्शन है वो लिखा हुआ है स्टेबलाइज शेकी वीडियो. सो अगर मैंने कैमरा अपने हैंड में यूज किया ना जब आप विदाउट ट्राइपॉड यूज करते हैं तो आपका हैंड थोड़ा शेक करता होता है हमेशा लिटिल बिट. सो क्योंकि हैवी होते हैं ना तो in that much they can always fix. वो आपका editing software ही ठीक कर देगा. But this is why we recommend instead of having those issues आप शुरू से ही जब उसको adjust करें ना या तो उसको किसी के ऊपर माउंट कर दें या उसको tripod पे hold करके shoot करें. Because when you use your hands आपका hands थोड़ा shaky रहेगा. And also because आप थक जाते हैं ना hold करते करते कैमरे को इतना high. That's why it gets very hard to hold. So just use a tripod. बेशक छोटा सा use कर लें या बड़ा वाला use कर लें जो भी आपको easy लगता है वो use कर लें. Okay? So what about the gimbal? Sorry, what? Gimbal. That's it. You can use that too if you can get your hands on it. Like it's not important to have it, but it's a very good again device to use. If you can afford it and you think it's a good investment, you should go get it for yourself. अगर आपकी videos को आपको लगता है कि वो significantly improve करेगा, then only like I would say it's worth it. Other than that, not really. Depending on. I think it does. It does improve. For sure, it does improve. Do you use one yourself? I use it sometimes. There you go. What do you film? आप क्या film करते हो? मैं गाना I sing and I film. Oh wow. I make videos of my poetry. I film and I share it in the Molten Women Council. Oh. What's that? Because YouTube channel नहीं है? है but उसमें अभी डालती नहीं अभी डालूंगी. अच्छा बनाना पड़ेगा. Inspiration मिल रही है कि मैं बड़ी सुस्त हूँ. I have to be more active. No, you have to be more active. इसको देर नहीं लगती है. Once you learn a little bit, कितना time लगता है? मैंने कहा आपको जब आप script plan करेंगे ना. I know how to do it. I've been doing it, but I'm lazy. Makes sense. मीना जी वैसे टीवी चैनल पे भी आती हैं. ये हमारी स्टार हैं. Oh my God. यहाँ बहुत स्टार बैठे हुए हैं. Dr. Gul wants to ask a question, और I think Dr. Sabrawal ने भी hand raise किया हुआ है. Okay, I can't see all of you, but go ahead, please.
Thank you, Uzma ji, and Faria, thank you very much. My question is, I raised my hand for the question. There are two questions in one. Okay. You didn't mention the length of video, how much it should be, 15 minutes, 7 minutes, because I see a lot of YouTube videos and which are maximum 12 minutes. So what do you recommend? And then the title of the videos. If we make the title of the video, how we make the title of the video? These are my two questions. Okay. Can you explain that? Yes, for sure. So I talked a little bit about the length ke bare mein in the beginning. I talked about it. But length ke liye, I would just say I can't. So there's no right time of the video. Like there's no right length. I personally am telling you guys कि जितना shorter आप video बना लेना उतना better है. For example, अगर एक video को, for example, अगर मैं कोई चीज दिखा रही हूँ, आपको एक review दे रही हूँ, एक let's say I'm giving a review of a hair dryer. अब hair dryer का मैं कोई review दे रही हूँ, उसके बारे में 5 points होंगे कि क्या चलता है, किस तरह चलता है, इसके बारे में क्या खराबी है. अब इस review को 20 या 30 minutes तो नहीं लगने चाहिए. अगर ये लग जाए इसका मतलब आपकी वीडियो too long है, आपने एडिटिंग सही नहीं किया है. You're right. इतना के रिव्यू को it should take like 10 or less than 10 minutes. That's it. Cap it. Because remember, आपको डिपेंड करता है कि ऑडियंस, अगर आप ऑडियंस, फॉर एग्जांपल अगर आप शो बना रहे हैं, एक ड्रामा सिटकॉम बना रहे हैं, वो बेशक 40 मिनट्स का बना लें क्योंकि लोग देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट चल रही है. लेकिन अगर एक कैमरे के सामने बंदा टॉक कर रहा है इतनी देर एंड यू जस्ट टॉकिंग, लाइक आप बोलते जा रहे हो और आपकी वीडियो ऐसे ही लॉन्ग होगी है, most likely you need to cut down your video for sure. What about the title? So title, आप for example अगर आपकी video for example reviews हैं, आपने पहले YouTube पे चेक करना है कि उसके अंदर पहले सर्च करेंगे. अब ये थोड़ी है कि most likely किसी ने आपके जैसी video already बनाई होगी for sure. तो आपने देखना है कि popular videos के title क्या हैं. अगर for example let's say let me see which one it is. Which example do I want to give you that's really good? How to make a video. No, challenge. Yeah, how to make a video is good. Challenge. आजकल challenges काफी चलते हैं. Let's say challenge, okay? जिस तरह TikTok challenge आ गया है, यहाँ से कोई challenge. अब कोई हमेशा trending पे कोई चीज ना कोई हो ही होती है. अगर उसका ना title आपने देखना है, most popular का जिसके पास highest views हो गए ना, उसका title को थोड़ा copy करना है. Not the exact same copy, but you're gonna use कि उन्होंने क्या keywords use किए हैं, ताकि जब आपके लोग video search करें, वो automatically उसी rhythm में आ जाए. Because you want to make sure कि आपकी videos को views मिल रहे हैं. वो तभी मिलेंगे अगर वो related videos के अंदर pop up होती है. जब अक्सर हम when we watch videos on YouTube, we see recommended. So recommended ऐसे ही आता है because of titles and the genre of video. इस तरह हमें पता चलता है कि इसने भी ऐसी बनाई है. Let me click that. Do you ever find yourself doing that? Yes. Exactly. So that's how because I'm making a different type of videos related to the health sciences, so I will choose my own title. I don't want to copy someone else. So the issue with that is you don't have to copy someone else's, but like in Okay. आपकी videos, what kind of videos are you making, for example? Because I'm a homeopathic specialist, okay. So very soon I'm launching my videos professionally, and this was a very good session. And I will my title based on the different types of the ailments. I don't use the word diseases, but the ailments. It depends upon which topic I chose and which titles fit to that topic. Then I will make the video maximum 10 minutes or 12 minutes. So I think when I think about, like, it could be different, you can do it however you want. Now when I think of what you just told me, I think of like this. So you will have a channel name, obviously, let's say Dr. Jamshed Gul homeopathic or whatever, okay? And then you're in your title series, you'll have a series, part 1, part 2, part 3, part 4, 5. Yes. Har ek video ke andar you'll talk about one specific ailment related to something. Yes. So when you say that, it'll be a series. But I'm sure I've seen a little bit of I would say chiropractor videos before. So I think the theme is very similar though. So you can look at their videos and to get inspiration to see how you would do your videos. Because because it's very important. You have to think about it. You're not making, even though you're the one making the video, you're making it, itna effort डाल रहे हैं, आपने make sure करना है कि आपकी video एक mass को पहुंचे, ताकि वो उनको accessible होना जरूरी है. अगर मैं अपनी, for example, let's say, like even though it sucks to say, कि English is a universal language right now. अगर मैंने अपनी, if I want, मैं अपनी video का title उर्दू भी कर सकती हूँ. लेकिन unfortunately हम उर्दू में तो type mostly कोई नहीं करता है, तो उनको मेरी video नहीं मिलेगी unfortunately. So इसलिए we want to make sure with the same logic
कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करें उसके अंदर कि जब हम गूगल पे वैसे ही यूट्यूब पे टाइप किया ना होम्योपैथिक, वो उस टाइम आपकी वीडियो आ जानी चाहिए। इसका मतलब उस वीडियो के टाइटल में होम्योपैथिक होना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Thank you very much. no Yes. problem. Anyone else have a question? Usman, I can't hear you. Dr. Sabharwal? Yes, I have a suggestion. Faria, wonderful presentation and very elaborately you're discussing everything. But I just want one thing that, say, for example, I'm amateur. So if you could have shown the light, the other perspective, bringing with you and showing it, or on the video, so that we can just have a glimpse of that, and we'll be just imagining in our mind what kind of paper that should be, and how it can be reflected and how it can be done. So practically, if you show there, you are sitting at home, so definitely you could have brought it, and then we would like to have some more lectures on that. For So sure. Actually, very good thing. I actually have my light with me. It's downstairs. If I want, I'll bring it as well. Show it to you how I made it. क्योंकि बिल्कुल yes, आपके we are सामने quite होएगा. amateur. For sure, definitely. Yes, so kind of you. No problem. Really. At the end, I will definitely bring that in. Good suggestion. मुझे याद करा दीजिएगा. If in case I forget, I will definitely bring it. मैं नीचे से ले आऊँगी. हो And I'll show सकता it है to you. मैं बाद तक बैठ ही ना पाऊँ, मैं निकल जाऊँ, मुझे जाना है कहीं। Okay. समीना नोज इट मुझे, तो मैं ये था कि चलिए कोई नहीं, आइंदा जब कभी बताएंगी आप, उसमें देख लेंगे। बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं, थैंक यू। मैं आपको लिंक भी कर दूंगी। बाय द वे, मैं वीडियोस जो मैंने देखे, जिसे मैंने देख के बनाया अपना खुद, मैं आपको वो भी यहाँ पे इसके चैट के अंदर लिंक कर दूंगी, सो आपके पास एक्सेसिबल हो। एंड आई विल लेट उस्मा नो के ग्रुप में भी पोस्ट कर दे। Great ओके, session, very informative. थैंक यू I learned a lot because I recently started a YouTube channel, so this is a good way of learning what to do. Because I often film it in the morning because often that's the time when the kitchen and everything is clean and everything is good. Exactly, लाइट आ रही होती है। लाइट very important. In the morning shoot कर लो, और in the morning depending on who lives in your house, it's more quiet too because people are sleeping, तो आपकी वीडियो शूट हो जाती है I easily. usually shoot about 10, 11 o'clock mostly. Yeah, exactly. Morning or evening when the light is very soft, I find it is very good for the photography. Yeah, look, Uzma has one too. Those I use those ones for a little bit too. They're just a little bit stronger lights, I feel like, but she has them as well. You can use those too, the ones that she has. डॉक्टर साहब आपको नजर आ रही है? Yeah, can you turn it on, Uzma, and see what it look like? Okay. मैं सब देख रहा हूँ, और उज़मा जी क्या दिखा रही हैं आप? It's on tripod stand. Oh, I see. स्टैंड तो मेरे पास है, ट्राइपॉड मेरे पास तो बड़े वाला है। Yes. ये लाइट Good Now I light. can see. इसके साथ stand है? ये पूरा स्टैंड है। Yeah. No, light separate है stand से, या ये one part है? One part है इनका। It is already built in. हाँ, आपने कहाँ से मंगवाया? Amazon? मेरा ख्याल है। Yeah, it's from Amazon. Amazon से मिलती है ये वाली। नाम क्या है इसका? क्या लिखेंगे सर्च करने के लिए? You could just type in studio light. Studio light. Yeah, studio light. मैं इसकी पिक्चर जो है व्हाट्सएप में डाल दूंगी ग्रुप में, और फारिया आई विल ऐड यू एज वेल, ताकि किसी ने भी क्वेश्चंस करने हैं। आई नो कि आप बहुत बिजी होती है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल लेना प्लीज। Yeah, Faria should be on Team MWC. You should be on Team MWC. That way you know what's going on and also participate more sessions. बहुत शुक्रिया। By the way, मैंने आप लोगों के लिए टिप शीट भी बनाई है, वो मैं एंड पे शेयर करूंगी। वो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप लोग सब रख सकें। जो पूरी मैंने प्रेजेंटेशन की है वो बिल्कुल सम अप कर रही है पॉइंट बाय पॉइंट। सो जो भी आज तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन वो टिप शीट पे अगर आपको कोई भूल गया पॉइंट, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको वीडियो जब आप बना रहे हो आपको कैसे फॉलो करनी है, जस्ट इन 10 स्टेप्स, वेरी सिंपल। फरिया, हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम सब भूल जाते हैं, हमें फिर दोबारा तुम्हारा लेक्चर चाहिए। बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही हो, बहुत Thank you so much. I really appreciate it. रमेश जी, अगर आप बूढ़े हैं तो जवान कौन है फिर? I can't see him, but चौहान साहब, आप और आपके डैडी, रियली आपके डैडी से भी मिला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ तो बहुत उम्र दराज होते हैं, और रियली अब तो डैडी चले गए दुनिया छोड़ के। I know 2 but साल he हो had a गए। very good life and long life and very healthy life. Yes.
Freya ji, I was going to ask you something. Like we do conferences and we have to have a light on the face when we're doing the conference, right? I'm using only a spotlight which is behind the laptop. Okay. Yeah. Right? But I was thinking जो आपने पहले कहा वो wax sheet लगा के उसके ऊपर, that would make it a little bit milder, right? Yes, it will make it milder. उसको बड़ा भी कर देगी जब लैंप आप जब आपने बल्ब लगाया होता है सीलिंग नहीं के ऊपर. मेरे पास है वो स्पॉटलाइट है टेबल लैंप जो फ्लेक्सिबल है. Perfect, very good. बहुत अच्छा है, very good idea. वो भी आप यूज कर सकते हैं और अच्छा है. You don't have to buy anything. आपको बस एक कार्डबोर्ड बॉक्स की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर आप पीछे डाल के आगे जितनी आप शीट भी यूज कर सकते हैं, वैक्स पेपर यूज कर सकते हैं या वो जो हल्की कॉटन की शीट नहीं होती व्हाइट कलर की थोड़ी जो सी थ्रू हो वो भी यूज कर सकते हैं आप. अच्छा आपकी मर्जी है. हाँ आपकी मर्जी है. चलो बिल्कुल. I will try to do with the wax sheet के साथ. Exactly, वो डिफ्यूजर होता है बेसिकली. मैं अगेन लिंक करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रही हूँ. मैंने अपने कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर ना पूरी एल्यूमिनियम भी लगाई थी क्योंकि जब वो उसके अंदर मैंने लाइट डाली थी तो रिफ्लेक्ट करी थी एल्यूमिनियम के साथ एज एन अम्ब्रेला ताकि डिफ्यूज भी लाइट हो जाए और ज्यादा भी हो जाए, you know, in different ways. So I will definitely share that with you. It's really good. This has been a very good tips you gave us, you know. Not only making videos, sometimes you presenting yourself. Like अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरी विंडो से लाइट आ रही है सारी सन और मैंने एक आधा उसको ब्लाइंड बंद किया है, नहीं तो वो सारी मेरे फेस के ऊपर सनलाइट पड़ेगी. जी फिर आप नजर नहीं आएंगे. You can't like if I just show to you if I do that. फारिया आप जो कह रहे थे कि इतनी लाइट आ गई अब. This is too much light now. Yeah, there you go. I can't even see you no more. Too much, yeah. iMovie की तरह एंड्रॉइड में एक ऑप्शन है ये कैमरा है, वो कौन सी है? So I'm gonna share that with you just in next 2 slides. Okay, just give me a little bit. No more questions, right, guys? Let's continue. Yes, go ahead. Okay, sorry, this one. Let's talk about the audio sound. Ab, acha, one thing very key याद रखना है. It's all in the song choice. म्यूजिक जब हम सुनते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे जो स्टार्स हैं इनकी अंदर कितनी रिदम है. जब आप सुन रहे होते हैं तो आप खो जाते हैं उनकी लाइक यू नो साउंड के अंदर. तो ऐसी जब आपकी कोई वीडियो देख रहा हो, आपने देखा आपको पता नहीं चलता है, कभी कभी बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा होता है, हमेशा कोई ट्यून चल रही होती है जो आपके माइंड को ना अपने आप ही ना कैप्टिवेटेड रखती है कि आप वो सुनते जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता, आप बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं. हालांकि बंदा बोल रहा है वीडियो के अंदर लेकिन पीछे बैकग्राउंड में एक साउंड चल रहा होता है जो आपके माइंड को ना उनके साथ इंगेज रखता है. तो इट्स ऑल इन द म्यूजिक चॉइस. और आप म्यूजिक की जो ट्यून्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गया, यू नो अगर आप कोई लेट्स से मेलोडी गा रहे हैं या फिर यू नो थोड़ा सा वैसे ही टॉक कर रहे हैं, कोई आपको फन म्यूजिक चाहिए इन द बैकग्राउंड, ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं ऑन रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, व्हिच मींस इट्स फ्री. अगर आप यूज करेंगे तो कॉपीराइटेड नहीं होगा. वेरी बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपने अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे पोस्ट करें इसलिए कि इन द फ्यूचर कभी आप यू नो इंशाल्लाह यू गेट पॉपुलर, जब आपकी वीडियोस देखें लोग, because you can eventually make money. लेकिन let's say अगर आपने इनमें कोई ऐसे copyrighted music use किया हो, let me give you an example. अगर आप किसी movie का song use करते हैं, let's say किसी हिंदी movie का use song करते हैं, you know there's a song called I don't know something called लहजा लहजा, okay? वो आप वो song use कर लेते हैं. Song तो use कर लिया आपकी वीडियो में, you're allowed to use any music you want. लेकिन जब at the end जब आप उसको क्या करें, या आपकी वीडियो वो नीचे भी उतार सकते हैं. अगर आपकी YouTube आपको ब्लॉक कर सकता है कि आपने किसी और का कॉपीराइटेड म्यूजिक अपनी वीडियो पे यूज किया है बगैर परमिशन के, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे थोड़ी दिए हैं. You just use it off the internet, so that's a problem, which is why I recommend that you don't use. या तो आप म्यूजिक अगर आपको मिल नहीं रहा, आप यूज ही ना करें in the beginning. अगर आपको यूज करना है तो आप फ्री म्यूजिक यूज करें, वो आपको मिल जाएगा रॉयल्टी फ्री म्यूजिक. गूगल से आप सर्च करें रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, जब उसको क्लिक करते हैं वो लिखा होता है कि फ्री है, इसके आपको पैसे नहीं देने की जरूरत. और यूट्यूब फ्री ऑडियो लाइब्रेरी, दैट्स माय फेवरेट, मैं उसको वो यूज करती हूँ. उनकी एक और सिलेक्टेड इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर क्या नाम क्या है, सॉन्ग्स भी हैं उसके अंदर, लाइक म्यूजिक एट द बैकग्राउंड, सिर्फ ट्यून्स भी हैं, हर टाइप का है, इंस्ट्रूमेंटल भी है, हैप्पी म्यूजिक भी है, रॉक म्यूजिक भी है. जो भी आपके वीडियो को थीम को सूट करता है आप उसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, एंड देन यू कैन यूज एनी software you're using, iMovie or anything from the computer, and use that clip and on your top of your video. So very important. It's all in the song choice if you're going to be using a song choice. Just know that later on, yeah?
फरिया, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है इस बारे में कि आप फ्री तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं, ये बता दीजिए। फॉर फ्री जो कॉपी, सो एवरी टाइम यू जब भी फॉर एग्जांपल आप गाने सुनते हैं ना, इस तरह के जो हम हिंदी म्यूजिक फॉर एग्जांपल सुनते हैं या कोई इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं, ये सारे कॉपीराइटेड हैं, ये सिंगर्स ने गाए हैं, जब तक आपको रिलीज नहीं करेंगे यू कैन डाउनलोड इट, इट्स नॉट अलाउड। लेकिन जो इस तरह की इंस्ट्रूमेंटल ट्यून्स होती है ना, जहां से आप एक्सेस करें, वहां पे लिखा होता है यू हैव टू रीड अ लिटिल बिट ऑन द ट्यून्स। अगर आपको डाउनलोड करने दे रहे हैं ना फुल ट्यून, मोस्ट लाइकली यू कैन यूज इट, इट्स नॉट कॉपीराइटेड। बिकॉज ये जो फॉर एग्जांपल दूसरे सॉन्ग्स हम सुनते हैं, लेट्स से हिंदी म्यूजिक जो सॉन्ग है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब से कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप अपलोड करेंगे ना उस तरह की सेम वीडियो, वो आपके नीचे उतार देंगे बिकॉज इट्स कॉपीराइटेड, वो आपने कॉपी किया। Definitely. Yeah. And copyright is only for 40 years. Yeah, I think so. I'm not 100% sure about the years. I have no idea. But copyrighted, that's what exists. अगर आप पुराना for example म्यूजिक यूज करें, I would assume कि आपको नहीं ब्लॉक करेंगे क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाता है। I'm not 100% sure. मैंने कभी ट्राई नहीं किया 40 वैसे। years का 40 years का आपका copyright होता है। Really? Yes. I had no idea. That's very good to know. I will actually check that out because one time I remember, this is how I know. I actually when I was making my videos in the beginning, मुझे एक ट्यून अच्छी लगी थी, वो मैंने यूज कर ली। मुझे लगा YouTube को इतनी जल्दी it was very similar to a Hindi song I liked. I used it. फिर मैंने कहा oh I'm sure YouTube को पता नहीं चलेगा कि ये बिल्कुल उस song से वहाँ से लिया है। But eventually जब मैंने उसको upload किया, I got a message saying you cannot monetize this video. कि अगर आपकी ये video hit चलेगी, you cannot make money on this video. So that video, even if it got popular eventually, I can't make money on that. So if let's say for copyright you have to seek permission and you have to pay the royalty, both things. Yeah, that's correct. अगर आपने इस तरह का म्यूजिक यूज करना है जो आपको लगता है आपको जरूरी है आपने यूज करना है, and if you really want to use it, then you have to pay, you have to ask for permission, you have to get the rights, you have to write them down in your description, you have to like make sure it's okay with YouTube for you to use or whichever platform you're using it on, to make sure that अगर आपकी future में video जब उसकी अच्छे views जा रहे हैं, everything is going good, कि आपकी वो ban न कर दें या shut down न कर दें, because it will be really sad कि आपने इतनी मेहनत करके कोई चीज बनाई हो and because of a reason like copyright वो उसको उतार दें. Okay, very important. So like I recommend अगर आप in the future, in the beginning, if you can't figure out a song और आपको नहीं समझ आ रहा है, just don't use music. Don't use it. थोड़ी देर आप थोड़ा जब उसको used to हो जाएंगे तब use करना शुरू कर दें. Yeah, you can use it in the beginning for a little bit, लेकिन आप don't expect those videos to be monetized in the future. You will have to make those videos again by using non-copyrighted music if you want to do that. So you guys just gotta think about it, how you guys want to do it. Okay? And like I said, one last thing I forgot to mention in this, your own tune. जो यहाँ पे गाते हैं, वो अपनी tunes खुद use कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी खुद का original music है. Of course, they're allowed to use that. Or with audio sound, like I said, अगर आपके पास external mic है, अगर मैं काफी ये use करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है use करना क्योंकि when I'm talking to the camera, I feel I get nervous sometimes. तो मुझे भूल जाता है मैं आधा क्या कह रही होती हूँ. So I film my video without any audio sometimes. So that's called a voiceover. So कभी आप देख रहे हो कुकिंग वीडियोस के लिए बहुत अच्छा है वो, जब आप कैमरा फिल्म करें ना, आप पूरी वीडियो ना बगैर बोले बना लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं. बेशक जो भी आपने शॉर्ट्स में लेके कट करना है, वो फॉर एग्जांपल अनियंस कट करें, अनियन कट कर लें, वाटर बॉईल करें, पूरा क्लिप में दिखा के once you're done filming the whole video, let's assume कि आपकी पूरी रेसिपी को आपको 30 मिनट्स लगे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप पूरी 30 मिनट की वीडियो थोड़ी अपलोड करेंगे. आप ओनली लेट्स से 10 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे एडिटिंग करके, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन स्पीड इट अप. अगर आपको 30 मिनट लगे हैं उसको उबालने में, आप 30 मिनट थोड़ी वेट करेंगे, आप बस लिखेंगे आफ्टर 30 मिनट्स हो गया. तो अब ये आप यूज करते हैं वॉइस ओवर के साथ. आप एक माइक लेके. Yeah. How do you use time lapse for making videos? I really want to try time lapse in my videos, but I don't know how you do it. So I use it after. I haven't ever used it in during. I always edit my videos after. I use it on iMovie. So there should be a way that you can do it like iMovie or any software that you use to time lapse your videos. So whenever I want to fast forward my video, मैं use करती हूँ iMovie पे. सब सारी मेरी editing जो है end पे होती है हमेशा. शुरू में मैंने बस इसको अपने shorts लेने, मुझे अपनी script से पता होता है. जब मैंने शुरू में script plan बनाई होती है ना, कि मैंने अपनी videos, क्योंकि मैं कोई जब मैं सोचती हूँ मैंने video idea मेरे आता है mind के अंदर, तो मुझे पता होता है कि मैंने किस तरह की video बनानी है, किस short से बनानी है. अगर let's say मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने एक cooking video बनानी थी जो मैंने अभी नहीं बनाई, मैंने बनानी थी for example making tea. Okay, अब मुझे ये शॉट मेरे जो हेड में याद आ रहा है, मुझे चाहती थी जो कैमरा है ना, वो कैमरा बिल्कुल ऐसे हो और टी मैं नीचे बना रही हूँ ताकि आप देख रहे हैं मैं उसके अंदर क्या डाल रही हूँ, और इसके अंदर मैं बोल नहीं रही हूँ. जो मैंने एंड पे वीडियो बना लिया है, मैं एक माइक यूज करके उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ. फिर मेरी स्क्रिप्ट यहाँ मेरे सामने पड़ी है and I'm just reading it. So you're gonna now take this for example,
Hi guys, I hope you guys are doing well. Today I'm going to show you how to make tea. I'm going to be putting in sugar. I'm going to be putting in tea. ये सब कुछ मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर है मेरा. ये आप अपने अच्छा माइक से यूज करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर पे. So for example iMovie पे very simple आप ये बना के वीडियो अपलोड करके उसको वीडियो को फुल साइलेंट करके तो म्यूट करके फुल वीडियो कि उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी बैकग्राउंड कुछ साउंड नहीं है. आप एक रूम में बैठ के बस स्टूडियो पे रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को देख के अपनी oh please now I'm putting in water, I'm putting in this, I'm putting in that, and then you say at the end, thank you for watching, you know, take care later on. Okay, any questions about the voiceover? Did you guys get how I'm saying the voiceover you can do? Okay. All right, so lastly, let's talk about the programs. So in programs and apps, like I said, iPhone, iMac, अगर आपके पास MacBook है, iPhone है, आप iMovie use कर सकते हो. Just a very simple editing software. वहाँ पे it's so easy to use. You just drag clips. आप अपने phone से जो clips हैं उनको drag करेंगे और वहाँ पे आपको options हैं उनको वहाँ पे already लिखा होता है नीचे. Do you want to fast forward the clip? If you want to fast forward it, आप कितना fast forward करना चाहते हैं? You want to do it 2 times, 3 times, 4 times. This helps for cooking videos, so you can fast forward them. And for Android, I've been using this app called Vlogit. It's also like good for creating like short videos and stuff. Okay, there you go. The Vlogit. Reviews on that. It's called Vlogit, Hania? Yeah. So can you please make sure you share it in the thing because I'm not a Samsung user. I found Bcut. I heard a lot about this app. Yeah, I heard about Bcut a lot. Yeah, I'll search that one and I'll see how it goes. Yeah, please share it with the group as well because I personally don't have a Samsung, so I don't use all these apps. But I know Bcut is really popular for Samsung. Bcut, so I found that for you guys. You guys can download it. जिनके पास Samsung है, उसके ऊपर आप same I guess features as well कि आप clips को drag कर सकते हैं. उनके ऊपर filters भी लगा सकते हैं. अगर आपको filters लगाने हैं अपने face पे, filters लगा सकते हैं. You can do a voiceover on that. Again, for voiceover, you need a good mic, so there's no sound around you. That and then for online, for computers, if you don't have any of these devices, you can download an external software जो free भी आता है. Adobe Premiere Pro है. I'm not sure if you have to pay for this one or not, but there should be a free version as well because obviously in premium version के अंदर और features होंगे. But basic जो features आपने use करने हैं ना, I know you can just get them from the normal one as well. I think free is only for 14 days. 14 probably days. Yeah, it's not का कोई है चक्कर for sure. Yeah, and that's really good. Yeah, really good. Final Cut Pro is really good. Bcut is this one, right? Which one? Bcut is this one on my phone. Yes, right? That's correct. That's the one. Yep. Okay. So Final Cut Pro, I heard is a very good software. I know that Final Cut Pro, but this is a more professional, intricate software. I haven't used it yet because I know you have to pay for it. But I know that, for example, the people I work with, Sham Idris and them, I know that they use this software. So to get their professional HD videos, they used this software to get their video editing going on because I saw them editing their videos. So and I said, okay, they use Final Cut Pro. So once you find yourself at that professional level where you think you need a software, then you can go ahead and invest in a good, expensive software because without it, you can still make your videos right now. Nothing is stopping you. Everything is available. It's free. You can use these apps. You don't need a pro software right now. That's any good app for Huawei? Oh, I don't know. Wouldn't it be Android? That's Android, right? Yeah, Android. Yeah, so Android, I heard Hania said Bcut. That's what I wrote. Android, you can use Bcut and you can use Vlogit. That's what she said. That she uses Vlogit. Bcut? Yeah, Bcut. Okay. Vlogit is this one. Yeah, there you go. She's showing it. Hania, can you please share it in the group as well so everybody? Yeah, I will. Okay, so lastly, बात करते हैं something bonus that you get out of your showcasing your talent. Monetization. Money. How do you make money off of this content that you're making? So let's say when I'm going to talk about a little bit of myself, somebody किसी ने मुझे last time पूछा था एक question, मेरे पास नहीं था उस time answer, so I'm going to answer it now. They asked me, yeah, Meeta ji. So she asked me how much money I have made so far off of YouTube. मैंने सिर्फ YouTube पे actually 7 videos ही make किए हैं. I didn't make that many. And off of the videos itself, I haven't earned any money off of the videos just because for YouTube, you have a limit. YouTube को कहते हैं in the past year, you have to have at least 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. That's hard to get. So far, मैंने अपना channel start किया था November के अंदर last year. लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा actively videos नहीं बनाई. तो जितनी मैंने बनाई, some of them got really good views. Some of them were okay. So far, मेरा जो watch hours हैं, वो बन गए हैं so far 1,500. लेकिन इस नवंबर में वो मेरा पूरा साल पूरा हो जाएगा, so they won't count.
which is why अगर मैंने ज़्यादा videos शायद बनाए होती, if I got more views, शायद मैं वो cut बना देती this year. But next year, I think I'll try harder with my videos. But I know it's possible. So far, जो मैंने money make किए हैं, I did make some money. I made it off of sponsorships. तो मुझे जब अपनी first video launch की थी, contact lenses की मैंने की थी, मुझे शौक बहुत था पहनने का. तो मेरी फर्स्ट वीडियोस पे मुझे एक किसी कंपनी ने खुद रीच आउट किया था. कंपनी ने कहा था कि आपने ये वीडियो बनाई है, हमें अच्छी लगी है और इसके व्यूज काफी अच्छे हैं, क्या आप हमारा प्रोडक्ट ट्राई करने की, you want to try it? So they sent me their product. They sent me like a whole bunch of, they sent me 6 contact lenses in the mail to my house for free. So I get to keep them, of course. And they gave me a coupon code. जो often जब आप वीडियोस देख रहे हैं उन कहते नहीं कि मेरा कूपन कोड यूज करें to get 10% off. So उन्होंने मेरे लिए एक पर्सनल कूपन कोड दिया मुझे. वो कहते हैं जब भी आपका कोई वीडियो देखे ये कूपन कोड यूज करेगा उसको भी 10% मिलेगा और आपको उसकी कमीशन मिला करेगी like a certain amount of money. So far from that. Faria, how do you get sponsors? I would like to get sponsors for my videos too, but I don't know how to. So either you, again, like I said, you get sponsors because they found my video. उनको मेरी वीडियो एक टाइटल, मेरी टाइटल की वजह से मिली, क्योंकि मेरी टाइटल ऐसे ना एक पॉपुलर वीडियो से थोड़ा सा कॉपी करके अपना यूज किया था, so they can find my video. तो इस तरह उनको, even though I wasn't a big YouTuber, I only had 200 subscribers. They found me, उनको मैं मिली और उन्होंने मुझे अप्रोच किया खुद. लेकिन ऐसे ही मैंने भी थोड़ी कंपनीज को खुद अप्रोच किया. मैंने अपना पहले तो एक सेटअप किया अपना ईमेल अकाउंट और अपना सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं अपनी ये वीडियोस पोस्ट करती थी, उसकी स्निपेट्स, उसकी पिक्चर्स, और उनको टैग करती थी बीच में. जब उनको टैग करती उनको पता चलता है कि मैंने अपने ये शोकेस किया है, और तो फिर उन्होंने देखना शुरू किया कि कितने लोग मेरा कूपन कोड यूज कर रहे थे. इसका मतलब है मेरे रिव्यूज उनको अच्छे लग रहे हैं, मेरे रिव्यूज एक्चुअली हेल्पफुल हैं, कि जब कोई मेरा रिव्यू देखता है वो सिर्फ देखता ही नहीं है, वो एक्चुअली चीज बाय करता है. तो मेरा एक रिव्यू, इवन दो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं थी, लेकिन मेरा रिव्यू उनको बिल्कुल उनको परसुएड कर दिया कि ये अच्छा है, ये चीज खरीद लो. फिर ऐसे उनको पता चल गया कि मैंने कितने ज्यादा यूज किए हैं. उससे आई गॉट 200 USD over the course of 4 months. और मैंने क्या किया, I just made a video for 5 minutes and that one got 35k views, and just for that video people are using my code now, because each code that's used I get like $2 USD for one code. So far so many people have used it where I got $200 just from that. Now that tells me, even though I'm not a big YouTuber, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 400 subscribers हैं, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं, जब मैं like that I can get 4,000, जब मैं YouTube की भी वो threshold को पूरी complete कर लूंगी, तब मुझे I can do Google ads, क्योंकि YouTube आपको directly नहीं pay करता है. YouTube पे नहीं आपको पैसे मिलते हैं, आपको ad से पैसे मिलते हैं. जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, उसके ऊपर ad नहीं चलती जो 30 सेकंड की, जो आपको वीडियो को इंटरप्ट करती है. जब वो आप ad देखते हो ना, तो जिस बंदे की वीडियो पे ad चल रही होती है उसको पैसे मिल रहे होते हैं. This is how the monetization works. तो जब आप उस 400,000 hours पे चले जाते हैं, वो देखते हैं ओके इस बंदे को इतनी ऑडियंस देख रही है, इस तरह की ऑडियंस देख रही है, फिर वो आपके चैनल को ना मोनेटाइज करने का मौका देते हैं by putting Google ads on your account. Okay? Any questions on that, guys? Okay. So this is how you're going to do that. And of course, like I said, कभी-कभी companies आपको खुद approach करेंगी. You just gotta make sure that कि आपकी email होनी चाहिए आपकी YouTube channel पे, आपके about page में. अगर आपका मैं click कर रही हूँ तो आपकी email मुझे नजर आए. अगर मैं company हूँ and I want to send you a product, like let's say shoes or whatever I want to send you, please have your email so I can reach out to you. And then public relations. अगर आपको कोई अप्रोच नहीं करा तो आप किसी को अप्रोच करें. हर कोई तो नहीं, कंपनीज तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, वो कितने लोगों को अप्रोच करिए सोशल मीडिया पे. अगर आपको लगता है कि ये कंपनी इंटरेस्टेड होगी आपको लेने में, आपको उनका प्रोडक्ट सेंड करने में. अगर आप कुकिंग फॉर एग्जांपल शो करती हैं, कोई कंपनी होगी मसाला, शान मसाला, यहाँ पे DNH मसाला, इतने सारे मसाले हैं. अगर आप उनको मैसेज करें, हे मैं अपनी कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ, मुझे अपना मसाला सेंड करना चाहेंगे, आपको फ्री में भेज देंगे, क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि आप उनका मसाला दिखाएं, अपनी वीडियोस में शोकेस करें. That's how you are helping them. It's kind of like helping each other right now. Companies are hungry to give you products so you can show them and people can, because that's how we generate sales. अब काफी एक लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि वो हाँ SoundCloud पे उनका सॉन्ग की प्लेलिस्ट है वो कैसे प्रमोट करेंगी. अब मैंने उनको कहा कि SoundCloud पे एक लिमिटेड यूजर्स हैं. There are people who they have to come across your playlist. या तो आप word of mouth करेंगी, लेकिन आपको शेयर करनी चाहिए Facebook पे. फेसबुक पे अगर ग्रुप होंगे, जिस तरह अभी ये ग्रुप है ना, अगर यहाँ पे मैं शेयर करूँ, I reach 25 people, all of you talking about my YouTube channel. So ऐसे जब आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, हमेशा अपनी प्लेलिस्ट को जो नेम है उसको लिंक कर दिया. कभी भी बाहर किसी को गए, if you have anything you want to say, hey this link, word of mouth helps. But now if you want to take it the money route, you can pay money to promote your songs always. So what these, for example, let's say ये जो stars हैं, artists हैं, जब ये perform करते हैं the concerts के अंदर, ये इनका way of promoting themselves है. They pay money to come
but they're promoting themselves. So if you think it's going to help you कि आपके इतनी popular आपको लगता है हो सकते हैं, you don't mind paying, you can pay for ads कि आपके songs के जो ads हैं ना वो दूसरे songs पे चला करेंगी कि उनको पता चल जाएगा, oh ये बंदे की ये, you know, for example भजन है या different song है, they'll click on it. But the best way, like no money way, is to just word of mouth, use platforms, TikTok use कर लें, Facebook use कर लें, या फिर क्या नाम क्या स्नैपचैट यूज कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया का यूज करें, ग्रुप्स के अंदर पोस्ट किया करें, क्योंकि फेसबुक पे तो हर कोई, आई थिंक, आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज अ फेसबुक अकाउंट ओवर हियर, है ना सबके पास? Okay, Priya. Yeah. Thank you very much. I have to leave, but it was very interesting. No Probably problem. have to carry on again. Okay. Okay, Thank that's it. you I was at the end anyways. मेरा last में आ गई थी मैं भी. Okay. So last, any questions? किसी के पास कोई questions हैं before I leave from here? तो मेरे पास अब क्वेश्चंस आएंगे. हमारे पास बहुत सी, सॉरी समीना, गो अहेड. Hello? Samina, unmute yourself. Okay. Yeah, I wanted to ask you and perhaps recap what not to do. What not to do? Okay. So what not to do, that's a good question. So what not to do would be, I guess, the opposite of what I just said. Again, so don't just pick up the camera and say, I will do it. It's okay. Mujhe script ki zarurat nahi hai. Do not do that, because you're going to waste so much of your own time. Aap baithoge, trust me, it's going to take you like 3 times the amount of time that it would have taken you if you planned out your like movie. Because aap baat kar rahe hoge and you'll get stuck, because remember, is baar aap kisi se baatcheet nahi kar rahe ho. You're talking to a camera. So you don't know, there's no eye contact, there's no like there's no interaction. So you have to make sure that you have script rakho, so when you're talking, aap confused na ho jao whenever you're talking. Okay? And what not to do is sound quality. जब आप वीडियोस बना रहे हो, ये ना हो कि आप पूरी वीडियो बना के एंड पे चेक करो कि अच्छा वीडियो कैसी गई. थोड़ा सा बंदा टेस्ट ट्राई करे आफ्टर 30 सेकंड्स कि मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कोई एडजस्ट तो नहीं करना बैकग्राउंड में कोई. अगर आप अपनी वीडियो बना के देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि पीछे मैं कोई डोर तो नहीं बार बार हिल रहा, कोई बार बार अंदर तो नहीं जा रहा, या कोई आपकी साउंड तो सही आ रही है. सो मेक श्योर यू लाइक दिस इज व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग. So टॉयलेट तो नहीं फ्लश कर टॉयलेट तो नहीं फ्लश हो रहा. एग्जैक्टली. सो दीज थिंग्स आर ऑल अवॉइडेड. यहाँ आपको ये पता कि घर के अंदर लाइक इज साइलेंट, कहीं आपकी ये ना हो कि आपकी बहुत अच्छी वीडियो जा रही हो, कोई आपको पीछे से आवाज मार दे तो वीडियो में आ जाएगा. अब आप इतना अच्छा सीन चल रहा होगा, शॉट तो वो कट हो जाता है. Yeah, that's why. Okay, and I have a tip sheet for you guys. I linked it to Uzma as well. Please Uzma, you can share it with them. It's like a 10 tip sheet. जो भी मैंने आज बात की है सारी, वो सारी उसके अंदर है, just in bullet forms, कि आपको याद रहे कि मैंने क्या क्या आज बात किया था. So please Uzma, I request you to share that. And if you guys don't have any further more questions for me, ये दो मैंने links अपनी ये है, मेरी YouTube channel की भी है, और जिस जो मैंने ट्रेलर उनके साथ किया था उसकी भी लिंक है. ये भी मैं उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगी. Actually in this Zoom chat I'll do it. Hold up.